welcome all of you for this open house event. It is our honor to have all of you with us today here. The idea of getting all of you here is the simple idea of showing you what technologies Growit is working on and how at low cost technologies but high tech technologies, how they can impact the farmers at a large scale. Generally when we talk of technology, हमारे दिमाग में क्या आता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा. फार्मर को लगता है कि मुझे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा. बट यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत कम खर्च में फार्मर हाईटेक फार्मिंग कैसे कर सकता है. जरूरी नहीं है कि उसको क्लोज हाउसेस बनाना, नेट हाउस बनाना या पॉली हाउस बनाना ही पड़े. लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकता है. हम इंडिया में हम बहुत फेमस है ना सब जुगाड़ के लिए. सो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा ट्वीक करके हम उसको थोड़ा सा कैसे सिस्टमेटिक बना सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म बन जाए रादर देन शॉर्ट टर्म होने के बदले. सो ग्रोइट खाली एक प्रोडक्ट ड्रिवन ही नहीं बट एक पूरा सॉइल टू हार्वेस्ट की एक कंपनी है. Seed might be fantastic, but if the seed is not given proper support, the plant is not given support, किसान तो बोलेगा यार आपने 1 लाख रुपए सीड ले लिया, मेरे को तो 10,000 की भी नहीं है. तो वहाँ पे ग्रोइट का let us bridge the gap between the farmer and the supplier with the best solutions. So अभी art this product जो हो रहा है, it is the first launch of this season. Hopefully by next year we will have as many as 50. The various solutions are being added. So in that very carefully we have picked up 8 products as he has mentioned. They are the soil conditioners, what we call they are the biostimulants, all organically certified, globally certified, not just here. So we have something called a buyback model available and we are the first company in the country to start this, where after the harvest is over, we ask the farmers to remove it, collect it in one location. We incentivize the farmers for giving it back to us. फार्मर से भी पूछो तो क्या करता है, जला देता है या डिस्पोज कर देता है. तो हम बोलते हैं दोनों मत करो, give it back to us. So that is something which we would like to promote through you to all the farm community so that this thing is taken care of. And we not only buy only our product back, we buy any product back. So that is something which we do as an initiative to maintain the environment in a better manner.